During the interventions of the PRI CBO Convergence Project, there was a felt need for health and nutrition interventions. In the initial phase of the project, activities such as the promotion of kitchen gardens, Nutri-Gardens in schools, and Anganwadis have been undertaken by CBOs and LRGS. Distribution of Ayushman Bharat cards and state-sponsored health cards have taken place in addition to awareness classes on communicable and non-communicable diseases. Prioritizing children's health, the project focused on strengthening Anganwadi centers as these institutions serve as the primary source of care for children and lactating mothers, playing a vital role in early childhood development and nutrition. The project adopted flexible intervention strategies based on the specific needs of each Anganwadi. This ranges from strengthening existing convergence platforms like mothers' committees and forming or reviving Anganwadi level monitoring and support committees to establishing new daycare centers and improving infrastructure with community support. আমাৰ PRI CBO যেতিয়া ইয়াত আহিছে তেতিয়া তাৰ পাছত আমাৰ এলাৰ্জি সিলেক্ট হ'ল এলাৰ্জি সিলেক্ট হোৱাৰ পাছতে আমাৰ ডাটা কালেক্ট কৰা হ'ল ডাটা কালেক্ট কৰি মেলি আমাৰ বাচ্চা লোকৰ সংখ্যা 3 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 6 ইয়াৰ্ছৰলৈকে পপুলেশ্যন আছিলে আমাৰ 46 জন হেতু কাৰণে আমি ICDS অফিচ গলো সকলোৱে লগ লাগি ICDS অফিচ গৈ CDPO মেমক লগ কৰিলো CDPO মেমে ক'লে যে আপোনাৰ ওচৰলৈ আমি আহিছো এটা অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ লাগে আমাক তাৰ পাছতে মেমে ক'লে আপোনালোকৰ পপুলেশ্যন কিমান আছে ডাটা কালেক্ট কৰিলে নাই আমি কৰিলো মেমক ডাটা কালেক্ট কৰা হৈ গ'ল আমাৰ তাৰ পাছত আমি ডেকে চেণ্টাৰটো শুৰু কৰিলো ডেকে চেণ্টাৰ আমাৰ CDPO মেম আহিলে আৰু মেম আছিলে আৰু ব্লক অফিচৰ পৰা আমাৰ BAM ছাৰ আহিলে উমাং CLFৰ পৰা ছাৰহত আহিলে সকলোৱে আহি আমাক সহায় কৰি আমি ডেকে চেণ্টাৰটো 29 অক্টোবৰত আমি ওপেনিং কৰিলো और हम लोग ने डे केयर सेंटर में जो नॉर्मली सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देता है ICDS आंगनवाड़ी सेंटर में अभी जो है आंगनवाड़ी सर्विसेज बोल के बोलता है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में उसी तहत हम लोग ने जितना भी टेक होम रेशन से और हॉट कुक मिल का जो आइटम से हम लोग ने बराबर ही दिया था जो नॉर्मल आंगनवाड़ी में चलता है उसका बावजूद और भी हम लोग ने प्रोत्साहन दिया था ACCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का ऊपर में उसमें हम लोग ने TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल किट्स को भी दिया हुआ था जैसे ब्लैक बोर्ड है चौक है फिर पेंसिल है कलर पेंसिल्स है फिर कॉपीज है उसमें The involvement of various stakeholders in ALMSA was instrumental in ensuring informed decision-making and successful implementation. ALMSA constitutes the stakeholders such as ward members, teachers and workers of Anganwadi, representatives from village organizations, representation of lactating mothers and parents of the children who are getting benefits of Anganwadi. The involvement of all stakeholders can ensure an informed and participatory decision-making to address the concerns. The committee will look after the Nutri-Garden. So in various villages across Jakram cluster, the SHGs along with the village organization, they have been able to have a Nutri-Garden. They have formed this committee, the mothers committee, as well as the ALMSC, wherein they grow certain vegetables and fruits in these Nutri-Gardens, and whatever harvest that they harvest from these Nutri-Gardens, it is being given or it is being distributed among the Anganwadi center children, or it is also distributed in the schools. Now we have almost 5 villages here who have their own Nutri-Gardens managed by the village organization.
Village Health Sanitation and Nutrition Committee (VHSNC) was established in India as a part of the decentralized planning process to promote community participation and ownership in decision-making processes related to health and nutrition. Celebration of Village Health and Nutrition Day and awareness generation on communicable diseases are major functions of the committee. Revitalization of VHSNCs with the support of Panchayat, village organizations, and the department has increased the scope of community-led public health approach. It was found beneficial in spreading awareness about preventive healthcare measures. ICDS ave coordination committee te khochunga village council le VO chan kopna hun tur angata na khanin committee sang te tunma a mami district a umsi ma se function chalau hawa kha khang hote kha kan function pui boka tin VHS NCB ka phechuan training khotina kan bo khwa te khosom pahnia khan kan nei fel thei boka. The empowerment of these citizen committees has transcended beyond mere participation to facilitating diverse health camps offering essential services like eye checks, cancer screenings, vaccinations and general medical care, thereby providing doorstep delivery of health services. अपनी अलग-अलग किस्म की हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं। यहाँ स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, अगर यहाँ से मान लो हमने ठियोग जाना है 1 घंटा लग जाएगा, तो अगर ऐसे कैंप जो दूर जाके क्षेत्रों में लगे करें, मैं ये सजेस्ट करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर एक पंचायत में ऐसे कैंप्स लगाए जाएं ताकि यहाँ के वृद्ध जनों को, महिलाओं को, जो लोग बिजी रहते हैं बगीचों में, खेतों में और अपने हेल्थ के बारे में इग्नोरेंट हैं, उनको हम सुविधा दे सकें। These interactions also nudge the community to initiate voluntary cleanliness drives, demonstrating their growing engagement and dedication to public health initiatives.